मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। ओ माय गॉड, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भाई ये मैच सॉलिड मैच था मुस्तफा। चेन्नई में आग लग गई आग आज, लग गई, आग लग आग गई लग पहले गई, पैन दिल आग लग गई आज। क्रेजी मैच अरे था। सिर्फ वही बोल रहा हूँ, बैंदी लग गई बिकॉज उसकी जो डीआरएस था, जो ड्रामा था, जो एक्शन था, जो कॉमेडी थी, जो What भाई a दिस वाज game, द man. What a परफेक्ट flipping मैच game. according to the situation. Pakistan on the verge of an elimination, South Africa on the verge of going tabletop. इससे बेटर सेटिंग मैं शायद कोई मैच की नहीं देखा। एंड चेन्नई में जो माहौल था आज, इट वाज ऑलमोस्ट पैक्ड, जबरदस्त विटनेस करे मैच बिटवीन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, द मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लॉज देना पूरे दोनों साइड्स को कि भाई दे स्मैश्ड इट कंप्लीटली। बट किंग and Rizwan and Chachu and everybody just failed, man, miserably today. Unfortunate scenes, Pakistan couldn't complete 50 overs भी नहीं बैट कर सके। अगर 20 रन मार लेते मुस्तफा वो लास्ट के 46th ओवर से लेके 50th ओवर तक, इफ दे मैनेज टू सर्वाइव, कुछ और हो जाता आज, पाकिस्तान कहीं और हो जाती थी। ये कुछ और नैरेटिव रहता था। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो गोटा है, जो गुर्दा है भाई वो टीम में, अरे भाई नेक्स्ट लेवल कोटा। उन लोग भी चोक हो गए थे ऑलमोस्ट आज। उन्हें बॉलर्स को ही कैन नॉट ब्लेम द बॉलर्स। बॉलर जान लगाए, पूरे एंड तक लेके गए। साले 50 ओवर खेल रहे 46 47 में ऑल आउट। भाई कंकशन सब इमाम को हो जाना था, शादाब को नहीं होना था। वो आदमी को फील्डिंग नहीं आती यार, इमाम कूद जा रहा है, ये हो जा रहा है भाई। पाकिस्तान did not play 50 overs. That's why they lost the game today. He cannot blame the bowlers. He can't say कि भाई bowler fielding, ये वो bowler भी थे, fielding भी थे, सब कैचर ले रहे थे, सब हो रहा था भाई। Batting was bullshit by Pakistan. They should have played 50 overs. I'll be very honest. 100% bullshit था यार। Because देखो भाई, how can you keep coming like Babar can't have an excuse कि मेरे को टॉप ऑर्डर पे ला दिया, मेरे को टॉप ऑर्डर पे। भाई आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, आपके क्रिकेट को जाके देखो बाबर के प्रोफाइल में क्या लिखा है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन। अगर आप 10 ओवर में आ रहे, आपको ब्लेसिंग है, आप इतना स्लो खेलते कि आप 10th ओवर में आए तो 40th ओवर तक तो आप 100 बना लेना था। भाई देखो, आप उसका देखो बैटिंग और शादाब का देखो, जमीन आसमान का फर्क। भाई नंबर 7 का बैट्समैन आके ठॉक छक्का इधर बाबर डर डर के खेले। दिस इज नॉट हाउ ही शुड हैव डन। ब्रो मार्करम भी वही पिच पे खेला, मार्करम भी फोर्थ पे आता, मार्करम फोर्थ पे आता, बाबर भी फोर्थ या थर्ड पे आता, दोनों सेम काइंड ऑफ है। बट मार्करम भाई, इनके दिमाग में कई का डर है कि भाई मैं अगर क्लियर करा बाउंड्री तो हमें पकड़ लेंगे मेरे को। या नो एग्जैक्टली। देखो ये इमाम मतलब क्या कर रहा है टीम में, मेरे को नहीं मालूम, वो रिकमेंडेशन है, नहीं बोल सकते कुछ भी। वो आधार कार्ड पे जो अपन नाम चेंज कर देते, एज चेंज करते हैं, उन्हें भाई एज से ज्यादा दिख रहा हूँ। मैं पहले तारीफ करूंगा दोनों टीम्स का। पहले साउथ अफ्रीका की तारीफ करेंगे। साउथ अफ्रीका जो भाई कैप्टनसी बबुआ की जबरदस्त थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, काम कैप्टन भाई, वेरी काम कैप्टन। मार्करम excellent batting, okay, batted really well. He led from the front, but South Africa will be very scared chasing now. Yeah, because bhai expose हुए आज। They were done. That LBW, if umpire's call, I don't know, मेरे को तो plum दिख रहा था, but I guess जो पहले review था वो भी should have gone in South Africa's favor than Pakistan's favor. तो मेरे हिसाब से I think that South Africa have to be very careful, and then Pakistan, the way they came back, they fought like a corner tiger. There was amazing, जबरदस्त bowling. शाहीन शाह अफरीदी, incredible spell, जबरदस्त bowling कर रहा उन्हें। ये बता बॉलर के रोटेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? बॉलर रोटेशन सही था या आपको लग रहा वो थोड़े ओवर जो सामा मीर को दे दिए, इफ्तिखार को दे देना था यार, लास्ट ओवर नवाज को नहीं दे सकते यार। आज बैगन का मैच विनर है, उन्हें उसकी फट गई थी, चित्तौड़ फट गई थी उसकी, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और आप देखो लास्ट बॉल पे जब नवाज को बाउंड्री मारे, बाबर का रिएक्शन क्या था, साले तेरे पूरा मैं लेग साइड पे डाल के दिया, तू ऑफ साइड पे डाल यार, तू पूरा लेग साइड पे डाल के फोड़ दे दिया। मगर फिर उसमें देखो आप, लाइक एंड ऑफ द डे बैटिंग की गलती थी। बॉलर्स कराए, उन्हें चांसेस क्रिएट करे, उन्हें वसीम जूनियर स्टैंड आउट। तो bowlers created chances. It's not like they didn't. They got unlucky with that LBW call. Why is your batting not finishing off? You know, आप 50 ओवर खेलो, आप 50 ओवर के मैच में आप 40 ओवर खेल रहे, दैट्स शॉकिंग। आप इमामुल हक यार, आपको नहीं आता क्रिकेट खेलना, आप सो जाओ घर पे, आप 8 किलो मटन खा के सो जाओ, आपको नहीं आ रहा खेला। प्रोटीन होना, आप 10 से 15 रन नहीं मार पा रहे। उसके बाद फखर जमान बेचारा, उसको कोई दुआ पढ़ के उसको नी सही कर दो, नी का इंजरी है फखर जमान। या तो आप बाबर प्रमोट हो जाना ऊपर, हारिस को ला लो यार, कुछ तो चेंज करो। आगा सलमान बैठा हुआ,
इमामुल हक इज अ लायबिलिटी इन द फील्ड, उन्हें फील्डिंग नहीं कर सकता, उन्हें बॉल के ऊपर कूदता, परसों के कमेंट्री में रवि शास्त्री या कोई रमीज राजा बोलते फर्स्ट फील्डर टू जंप ओवर द बॉल। तो ये आपको ऑलरेडी इतनी क्रिटिसिज्म दे दी, आप इमामुल हक को कई को खिला रहे भाई, इमामुल हक में क्या टैलेंट दिख रहा, चश्मे लगा के खेल रहा हूँ, इसको सही दिख रहा नहीं बॉल, तो फिर भाई इसको खिला रहे कई को आप। ब्रिंग इन आगा सलमान, प्रमोट बाबर, अब प्रमोट रिजवान, अब आपको एक्सेलरेट होना फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग। अब बाबर रिजवान दोनों ओपनिंग कर चुके हैं भाई पहले, अभी सीन हिम इन T20 ओपनिंग, सीन हिम इन 50 ओवर ओपनिंग, तो भाई कर लो ओपनिंग, आगा सलमान को ला लो, हारिस को ला लो, कितने प्लेयर होना भाई इतने आर्सेनल में। और ये नहीं बोल सकते कि बैटिंग डेप्थ नहीं है, नवाज, शाहीन, वसीम जूनियर तक बैटिंग कर सकता है। टुडे आप 50 ओवर्स खेलना था। आज देखो, आज उन्हें नहीं करा एक्सपोज बॉलर्स को, आज नहीं बोला बाबर कुछ भी बॉलर्स क्योंकि उन्हें बोल ही नहीं सकता, बिकॉज़ मैच में उन्हें लाया वसीम जूनियर क्रैम्प्स आ रहे भाई, मैं पानी पी रहा हूं, इतना पानी मैं पी रहा हूं जो वसीम जूनियर को देख के मेरे को क्रैम्प्स आ रहे। They showed today whatever problems they have in the team management, there is that जो भी problems है, they're a very talented team, very talented भाई। वैसा like मैच खत्म था 50 of 100 fairs, no one wins games like that, we have 5 wickets in hand, yes you have to blame South Africa a bit for choking, but the way they were bowling, they built pressure, no हाँ वही है, उन्हें शाहीन जो incredible bowling कर रहा था, he was backed by वसीम जूनियर, even हारिस, incredible कैच, वो एक हाथ का कैच जो हारिस पकड़ा भाई 150 पे डाल के यूं लंगड़े होते कि आ गया, बेहतरीन कर रहा था उन्हें। तो यहाँ पे पूरी बैट्समैन की गलती है गेम में, एंड you know from South Africa's point of view, look, chasing at least they got over the line, ठीक है, बहुत बकवास choke करे, they shouldn't have choked like that, but they at least they crossed the line today, and Aiden Markram, man, this guy is a world class batsman, man, भाई सनराइजर्स के लिए यही कर ले भाई, तो अगले आईपीएल करता भाई, उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मैं आपको बोलूं, जब he made Sunrisers captain, I said this guy is my captain, he's my leader, this is why he's a class player। उन्हें जो आप देखो मार्करम कैसा, आज तो वाइस कैप्टन था, बट उन्हें जो इनिंग खेला और बाबर जो इनिंग खेला, और भाई बाबर के पास आसमान भी फर्क नहीं है भाई, इट्स लाइक जन्नत और दोज़ख का फर्क है भाई, उतना फर्क है। बाबर at least has like batters behind him, Markram doesn't, you saw like when he got out, it was हल्लक में आ गया। यही सवाल है मेरे को भाई, कि जो आप अभी बोले मेरे को भी यही सवाल, मार्करम हैज बैट्समैन अराउंड है, बाबर डज दैट फोर्स हिम टू प्ले स्लो, के भाई कोई उसके अतराफ में टिक रहे नहीं तो उन्हें केस के ऊपर में मारने जाएगा। भाई मार्करम के साथ भी नहीं टिक रहे थे, उन्हें टिका रहा था, he was playing the shots, he was taking the pressure off the new batsman। अब डेविड मिलर, it's not like he was giving company, Markram made sure कि मिलर will be comfortable on one end because I'm going to take the shots, I'm going to take the risk। 100% यार, वो तो भाई बैटिंग हैज नो एक्सक्यूज टुडे ऑफ पाकिस्तान बैटिंग बिलो पार, बहुत लाइट बैटिंग है यार पाकिस्तान की, इतनी डर डर के खेले भाई। आई थिंक हमला भी अगर टीम फॉर्म करे तो थोड़ी बहुत विल शो अ लिटिल बिट ऑफ गट्स एंड बैट, बट डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस ऑन द बैट। आप 50 ओवर्स खेल लेते, 30 रन 20 रन भी कर लेते यार, आप बच जाते थे। शादाब ने तो वो भी नहीं बनता था, नवाज एंड शादाब एंड साउथ शकील जो तरीके से बैटिंग करा के, देखो भाई एट द एंड ऑफ द डे आपका खाली मेंटालिटी तो होता था कि भाई हमें 250 आ गए, 40th ओवर में ऑलरेडी आप थे उधर, आप अगर 50 रन 10 ओवर्स में नहीं मार सकते तो कितना रन बॉल ही पूछ रहे भाई, कुछ भी। आप फर्क ये देखो मुस्तफा, फील्डिंग सेट बाय पाकिस्तान, फील्डिंग सेट बाय साउथ अफ्रीका, सिंगल निकालना पाकिस्तान को, हाउ आर यू नॉट एबल टू कवर द कवर्स में प्लेयर्स डालो यार, पॉइंट उन्हें सिंगल बहुत फ्री दे रहे थे, सिंगल फ्री बहुत दे रहे थे, सिंगल निकालना है पाकिस्तान। और मैं ये फर्स्ट मैच नहीं बोल रहा हूँ, मैं कितने मैचेस से ये बोलता हूँ कि भाई पाकिस्तान से सिंगल डबल निकालना बहुत इजी है, टू पुट प्रेशर बैक ऑन पाकिस्तान इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन क्रिकेट। और यही छोड़ा कि पाकिस्तान इज नॉट एबल टू अप्लाई प्रेशर, बॉलर जबरदस्त डाल रहे, बट फील्डिंग और बैटिंग आज बैगन में मिला दिए, तो भी एटलीस्ट दे टुक देयर कैचेस टुडे, उतना बोल सकते हैं। But these are the two like exciting teams, this is the best match of the world cup till now भाई। देखो भाई, इंडिया के तो लेवल पे कोई नहीं अभी, अब साउथ अफ्रीका है बोल सकते, बट साउथ अफ्रीका का एक्सपोज ये हो गया कि भाई इतना चेसिंग में थोड़ा हिचकिचाए। हेनरिक क्लासन को निकाले बाद हमला ये बोल दिया कि मैच इज ऑन, हेनरिक क्लासन जैसा बैट्समैन आके वसीम जूनियर निकाला, फिर अपन बोले कि भाई मैच इज ऑन, हेनरिक मारना शुरू कर देता तो वहीं टीवी बन। मगर अब ये पॉजिटिव देखो, नॉर्मली साउथ अफ्रीका लाइक व्हेन यू हैव द टेल कमिंग इन 20 रन्स टू गेट 2 विकेट है, यू वुड थिंक पाकिस्तान विल विन दिस गेम, राइट? सो साउथ अफ्रीका, इफ दे लुक एट द पॉजिटिव, महाराज स्टक इट आउट, एनगीडी स्टक इट आउट, शमसी स्टक इट आउट, सो दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई अगर आप पॉजिटिवली देखें कि भाई ठीक है हम लोग चोक हुए, कोलैप्स हुए, लेकिन वी क्रॉस द लाइन व्हिच वी नॉर्मली डोंट डू इन वर्ल्ड कप्स, एंड ब्रो सेमीफाइनल्स इज क्लोज नाउ फॉर द Proteas। South Africa are very close to that semi-final line, and nobody, not a lot of people thought South Africa would make it to the semis। Everyone had सुदीप दादा कैसे आप उन्होंने बोल रहे कि भाई नवाज को वो ओवर, मैं भी मानता हूं यार, इफ्तिखार को दे देते, इफ्तिखार को बोलते भाई तो पास डाल दे। मैं आपको क्लियर बोलता हूं, वो तो लाइक वो था कॉल, अगर इफ्तिखार को दिए, अब जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उन लोग बोलते थे कि भाई आपके पास
नवाज है आपका 10 ओवर डालता है, आप उस जगह को क्यों दिए? हाँ. That is just luck. I think his captaincy, I'll be very, you know why Today. I think it was decent, because when he gave Osama the ball, I said, why the hell is giving And then Osama he the ball? got the He breakthrough. हाँ. got the breakthrough, he picked up the wicket. यार And उसामा का लेकिन एक ही चीज समझ में नहीं आया भाई, अच्छा डाला बट फुल टॉस और छिक्का, ये एवरी ओवर एक छिक्का खा रहा बंदा भाई, वो बंदे को फुल टॉस का क्या की बीमारी है. एडन मार्करम यार टू गुड यार, लाइक सैल्यूट टू दैट गाय, नेक्स्ट लेवल. अली भट्ट भाई बोल रहे पाकिस्तान डिजर्व ही करता था या जीत. तो मुस्तफा एक बार अपना फोन खोलो, सॉरी हम लोग कमेंट्स भी लेंगे, बट यू नो नॉट के हम लोग यू नो टीम्स एनी आइदर टीम सपोर्ट कर, मुस्तफा भाई साउथ अफ्रीका ने सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली, बट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट टुडे व्हाट वी सीन, मर रहे थे भाई ये वर्ल्ड कप में ऐसा मैच देखने के लिए, मर गए, आंखें तरस गए, आंखों में यू नो आंसू आ जा रहे थे वन साइडेड गेम देख देख के. ये जो गेम था आज यार पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, चेन्नई जिस तरीके से यू नो शाउटिंग बोथ द टीम्स नेम, जबरदस्त प्लेयरों के नामा लेते हुए. तो नंबर्स अनलिस्ट पूछ रहे ब्रो धर्मशाला से, कब आए भाई धर्मशाला? तो 22 तारीख को मैच था, वो तो बहुत टाइम हो गया, तो हम लोग आके अब अपलोड करने वाले. अगर आप लोग नहीं देखे तो हम लोग ड्रोन शॉट डाले अभी धर्मशाला के स्टेडियम का, इतना खूबसूरत माहौल है वहां पे, आप देखो प्लीज जाके. सुदीप दादा बोल रहे हैं नेक्स्ट मैच एनसी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कौन विन होगा बोलो, उसके बारे में बात करेंगे आज. तो अभी थोड़ी देर पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, सुबह का गेम है, ऑस्ट्रेलिया सुबह उठती नहीं उठती देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान ही डिजर्व करता था बोल रहे अली भाई. ये जीत जाती तो फिर क्या होता बोल, भर तो आना ही था. आई मीन देखिए भाई, अगर ये जीतते थे तो काफी यू नो कॉन्फिडेंस आता कैंप में. एक दूसरी चीज, आप सीखने का एक मेंटालिटी वापस आ जाती. जो फर्स्ट टू मैचेस आप जीते इंडिया के बाद से, जो इन लोगों की मेंटालिटी डूब गई, बैगन में मिल गई उनका एकदम, जस्ट गॉट शेल शॉक के भाई क्या हो रहा हमारे साथ यहाँ पे. बैटिंग, और जो बाबर बोले स्पॉट ऑन था कि भाई बैटिंग चली तो बॉलिंग नहीं, बॉलिंग चली तो फील्डिंग नहीं, फील्डिंग नहीं चली तो बॉलिंग. तो ऐसा एक रिसाइकल जो एक डायग्राम बनाते देखो आप, इधर नहीं चल रहा तो दे वर नॉट एबल टू गेट दैट. एक विक्ट्री डज चेंज द यू नो मेंटालिटी इन द ड्रेसिंग रूम. आप यू नो फिर थोड़े बहुत डिसीजन भी ले सकते कैप्टन के, जैसा कि भाई हाँ इसको निकाल उसका, वो तो कैसे भी ले सकते हैं, बट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका एज अ कैप्टन इन योर ट्रूप्स, इन योर प्लेयर्स. और आज जरूरी था ये विक्ट्री, बिकॉज टेबल पे कहीं ना कहीं आप यू नो एक ऊपर चले आते थे, 6 पॉइंट आ जाते थे आपके एक. अब अफगानिस्तान हारना, ऑस्ट्रेलिया हारना, श्रीलंका हारना पाकिस्तान के लिए, और श्रीलंका इन लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में लड़ाई है. टॉप 3 भूल जाओ, कोई नहीं आ सकता. आई थिंक टॉप 3 नाउ इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका आर मोर और लेस फिक्स्ड. अब इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया को मारती और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को मारती, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के लिए अच्छा होना शुरू होगा. अगेन बहुत फार फेच्ड है अभी पाकिस्तान का कैंपेन, बहुत फार फेच्ड है अफगानिस्तान श्रीलंका. पॉइंट ये है कि भाई ये मैच जीतना जरूरी था पाकिस्तान के लिए, to bring something to the table, to bring pressure to the opposition. नहीं, बेसिकली क्या था, ये मैच जीते तो मैथमेटिकली उन लोग उनके हाथ में रहता था. अभी क्या हो गया, now they have to depend on other teams, they have to depend on Australia, they have to depend on Afghanistan losing, काफी रिजल्ट्स उनके फेवर में आना है. अगर आज पाकिस्तान जीती तो उनके हाथ में रहता था, they won the other games, आज हाथ में आ गए, लेकिन because I think अगर ऑस्ट्रेलिया you know ऑस्ट्रेलिया को भी दूसरे मैचेस थे, बांग्लादेश को भी दूसरे मैचेस, अफगानिस्तान को दूसरे मैचेस थे, पाकिस्तान वन ऑल देयर गेम्स, दे वुड हैव क्वालिफाइड बिकॉज़ एवरीवन एल्स इज ड्रॉपिंग पॉइंट्स. अली भाई बोले वर्ल्ड कप इंडिया का है कि अभी भी नहीं बोल सकते, इंडिया अभी भी बैटिंग फर्स्ट नहीं करे. आज देखिए हम देखे साउथ अफ्रीका को चेस करते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम हैबत में. इंडिया ऑब्वियसली वेरी अहेड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, बट हार्दिक पांड्या की इंजरी आए बाद से ये कैंप में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता भाई. इंडिया मेरे लिए भी इंडिया जीत रही वर्ल्ड कप, नो डाउट ऐसा लग रहा है, बट अगेन यू डोंट नो क्रिकेट ऐसी गेम है. मेरे लिए देखो आप यू नो अभी नहीं बोल सकते, बिकॉज इंडिया नॉर्मली मैं देख चुका हूं डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड कप्स को, फिर नॉकआउट में प्रॉब्लम रहता है. खुली बात है, लाइक इसमें छुपाने की क्या बात है. 2019 में देख लो आप, डोमिनेट करे, दे स्मैश्ड एवरीवन टॉप द टेबल. 2015 में डोमिनेटेड द टॉप द टेबल. सो आई थिंक ओवर देयर फाइनल में आए तो वहां पे जो है, अगर आप देखें इंडिया के परफॉर्मेंसेस, दे ऑलवेज डोमिनेटेड गुस्टी. उनका असल्ट है सेमीफाइनल होगा, मैं कब से यही बोल रहा हूं. सेमीफाइनल वही है ना, मुंबई 50 ओवर की टीम जो इंडिया की है बहुत बेहतर है कंपेयर टू ऑल अदर टीम्स. आई थिंक इंग्लैंड ऑन पेपर इज रियली गुड, बट दे हैविंग अ नाइटमेयर. उन हटा लो, न्यूजीलैंड इज वेरी गुड. And then right now, you know, teams like South Africa, Pakistan, मेरे लाइफ में मुझे फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका को इतना कॉन्फिडेंट देख रहा हूं मैं, इतना कॉन्फिडेंट. एबी को रख लो आप, यू नो वो टाइम का टीम को रख लो आप, दे डिडंट डू एज गुड एज दे आर डूइंग नाउ. नो देखो वो पता चलेगा फिर भी सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका, वो भी चोकिंग मेंटालिटी में. मेरा यही पॉइंट है इंडिया के बारे में. इंडिया पहले इंडिया ये बोलता हूं कि
अगर सेमीफाइनल में वहां पे उन लोगों को टेस्ट रहेगा, अभी तो दिख रहा है इंडिया का ही वर्ल्ड कप है, मगर Correct. उनका मेन टेस्ट वही होगा। Semi- 50 ओवर टीम उनकी सॉलिड है, इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सेमीफाइनल में अगर आपकी पड़ गई न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, आप कौन सा कॉम्बिनेशन खेलेंगे? अगर आपको पहली बैटिंग करना है, और फिर ड्यू आ जाता ट्रैक के है, सो ऊपर दैट इज व्हेयर इट्स गोना बी। राइट नाउ इंडिया आई थिंक विल कम फर्स्ट इन द ग्रुप अभी स्टेजेस। सब अच्छा चला, लेकिन अब प्रेशर बिल्ड होगा, और प्रेशर के अंदर थोड़ा हाँ, ट्रिपल अगर हो गया इंडिया, जैसे मैं कि तो कहीं बोल ना रहा हूँ, कहीं आप एक आध हारे भी तो उससे सीख सकते हैं, राइट? हाँ पूरा जीते सेमीफाइनल में अगर हार गए, दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। आई थिंक इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट विल बी सेमीफाइनल्स। राइट नाउ दे आर प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट, yes दे आर आउटस्टैंडिंग। न्यूजीलैंड हैज बीन रियली गुड, साउथ अफ्रीका हैव punched above their weight, yes England have been very disappointing, Pakistan have been disappointing, although at least I'll tell you something, Pakistan today they fought, they were took it till the end. The match was done, there was 6 wickets left and only 50 runs, they took it till the last wicket. England didn't even do that. England have been very bad in this yeah World Cup. At least Pakistan fought, I'll give them that. Afghanistan, at least they fought, they've upset big teams. Bangladesh, they've played well in हाँ, अभी तो matches also. पाकिस्तान में जो बांग्लादेश, वो भी एक डार्बी है, वो भी देखना, वहां पे जीतना है हाँ, पाकिस्तान। अब जो भी है पाकिस्तान को जीतना है, दे हैव टू अगेन, जैसे मुस्तफा बोले, ऑस्ट्रेलिया हारना, इन्हू हारना, उन्हू हारना, अपनी उनकी गाड़ी पहले सही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद बात की बात चीज है, पहले ये लोग बांग्लादेश से जीतना, न्यूजीलैंड है, फिर इंग्लैंड है भाई, ये 3 मैच हैं अभी इन लोग के, और वो बैंगलोर में न्यूजीलैंड का गेम, तो वो पिच भी उनको मालूम है वहां पे क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और आज भी मैं ये बोलूंगा, हारिस रऊफ को पावर प्ले में नहीं डाले, दैट वाज अ गुड कॉल इन द बिगिनिंग, बट स्टिल पावर प्ले बोलिंग, शाहीन शाह अफरीदी जो 16-18 रन दिया वो पहले ओवर में अगेंस्ट पटेल, दैट वाज 15 वाइड दे दिए भाई, 15 वाइड भी दे दिया। Chachu also gave in the first over, he gave a lot of runs. So So first ball of the innings was the 5 power play wide. में you have to be much more careful, you have to be better in that. Like आप 20 रन 30 रन देते हो 2 ओवर में, 34 in 2 overs, right? So that's where again Pakistan have to learn from their mistake in the power play. But the way they fought back, they played like brilliant cricket. I think the fact that they made a game out of this, it's hats off. I know if you're a Pakistani fan, or if you looking at it from a different perspective, you're like kya fayda and everything, but at least we saw a good game of cricket. दोस्ती यारी की टीम थी सर। आमिर और इमाद अबरार को टीम में ना रखना सब बराबर की वजह से। देखिए, अब कुछ बोलने का तो देखो भाई, वो दोस्ती यानी कि टीम रहने दो, जो भी रहने दो, मगर आज दिखाती है टैलेंट है टीम में, जीत सकती है ये टीम। आप देखो साउथ अफ्रीका जो डोमिनेट कर रहे, 400 रन मार रहे, आप यहाँ पे उन लोग को फंसा दिए, वहां पे लेके आ गए थे, गेम ऑलमोस्ट आपके हाथ में था, यू हैड ओनली 1 विकेट लेफ्ट। सो आप बोल सकते दोस्ती यारी ये वो जो भी है, बट एटलीस्ट उन लोग कंपीट कर रहे थे। दोस्ती यारी सब साइड में भाई, अगर इमाद भी आता, यहाँ फेल होते थे, उन्हें भी आता, तो ये वही कोई कुछ ना कुछ तो भाई एक्सक्यूज होता था। एट द एंड ऑफ द डे आपको 15 मैन का स्क्वाड दिए आप। हाँ, ये जो बात है कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट सही नहीं थी पाकिस्तान की, थक के चूरे, क्रैम्प्स कितने हो रहे हैं आप देख लो, हर किसी को हर टूर्नामेंट में खेल रहे, ये देखने जा रहे अपन। अब वही हो सकता ना, एट द एंड ऑफ द डे इसको ले लेते, उसको ले लेते, इसको कर देते, उसको कर देते, वो तो उलना रह भी तो नहीं रहे, गारंटी नहीं जीत की। तो अब जो टीम थी, आज जो देखने को मिला पाकिस्तान के हिसाब से, प्रॉब्ली द बेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार, द बेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार। बट हाँ, ये है कि देयर आर लॉट ऑफ होल्स इन दिस टीम। बाबर आजम नीड्स टू स्टार्ट थिंकिंग। अब जो 3-4 मैचेस बाकी है आपके, इमाम, आई डोंट थिंक इमाम शुड प्ले नाउ। अभी बस हो गया भाई उसको देख के। नाउ ही हैज टू टेक सम टफ कॉल्स। आगा सलमान शुड बी brought in. There's a lot of poor cricket from both the sides, couldn't handle the pressure. I mean, they both poor cricket बिल्कुल from both the sides. But that makes it more entertaining. जब गलतियां होती है टीम से, आपको टीम मैच बनता, so Pakistan made mistakes, then South Africa made mistakes, Pakistan got back into the game, then Pakistan made mistakes, South Africa got back into the game. तो गलतियों से आपका मैच बनता, माहौल बनता। ओवरऑल अगर आप न्यूट्रल है, राइट, न्यूट्रल में देखें तो ये बेहतरीन मैच था, जबरदस्त मैच था। हम इंडिविजुअल एरर्स अगर आप उसमें देखेंगे, साउथ अफ्रीका भी बहुत गलतियां करे आज, एंड दे शोड वीकनेसेस इन द टीम, दे एक्सपोज्ड, स्पेशली मियान सिंह के बाद बैटिंग उतना नजर नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट दे क्रॉस द लाइन टुडे। एक मिनट, हम लोग अभी आ रहे हैं। So yeah, I mean, बोल दिए भाई। कल के मैच का देखिए आप, सुदीप भाई आप पूछ रहे हो कल के मैच का। कल का मैच अगेन ऑस्ट्रेलिया अगर जीती तो काफी फर्क पड़ सकता है, ऑन द टेबल काफी फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जीते बाद इट विल मोर और लेस लुक के भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया क्वालिफाई हो गए।
पंटर आ गया, पंटर अभी आवाज आ रही, पंटर, पंटर का नाम लिया मैं, पंटर आ गई, पंटर, yes you back guy and you're also back, पंटर's also back, sorry थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं हमारे, Yeah, baby. Yeah, baby. What a game of cricket. An absolute cracker. Mr. Punit, what a game today. South Africa versus Pakistan. This is why we watch cricket. The game was going one way, then went the other way, then this way. जैसे अपने भाई बोले कि गलतियां होने से और माहौल बना गेम का. And the Chennai crowd, man, you have to look at that crowd. Yeah. Hats off, they were supporting both teams. They were appreciating good cricket. This is what you want to see. बहुत जबरदस्त मजा आया. I mean, for Pakistan fans, commiserations. South Africa fans, congratulations. They were, you can say they almost choked, but it was a great game of cricket. These are two unpredictable teams right now. South Africa, we've seen in the past 2019 World Cup, they had a very poor World Cup, but they fought back from here. This guy, उसको World Cup में बैटिंग शायद उसका उतना क्लास नहीं रहता है, लेकिन जो उसकी कैप्टनसी है, दिमाग है, और इन्हें ये प्लेयर्स को लेके चल रहा है. इन्हें मार्करम, यानसन, he's produced these players and he is backing the full tit. No Nokia, no Rabada today, bro. No Nokia, no Rabada. वो शम्सी को लाने का जो प्लान था जबरदस्त था. शम्सी आया, 4 विकेट्स लेके चले गया. बाबर का विकेट तो इतना बेकार. बाबर यार बैगन का बाबर 50-70 बॉल में इतना उसको चढ़ा लूं. मैं सबको बोल रहा हूं बॉबी को देखो, बॉबी is coming home, Bobby is this, Bobby is that, Bobby is this. I'm like, what the hell do you want me to do, man? Like, you're the best player in the country. Khali, all you had to change was your mindset and think, bro, even if you got out 30 of like 18 balls, I would have taken it. But like, you can't just sit over there and start fighting on the crease. आप देखो रिजवान फिर भी बेहतर खेल लिया उससे. आप फिर भी रिजवान वन ओवर डिड वन अगेन, जैसा उन्हें करता उन्हें एक्साइटमेंट में आके फिर पुल खेलने गया, फिर एज दे दिया. बाबर अगेन, I don't know, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, is he doing it for individual runs or because the fact उसको मालूम कि इसके प्लेयर टिक नहीं सकते ग्राउंड पे, उन्हें स्लो खेलता. ये दो सवालों में मैं बटा हुआ हूँ कि भाई या तो इन्हें लोग जो सुनने में आता है मेरे को कि इंडिविजुअल या तो टिकते नहीं. देखो बिकॉज अगर आप देखो इमाम चले गया, अब्दुल्ला शफीक चले गया, अब इन्हें भी चले जाएगा तो रिजवान भी चले गया उसके सामने, तो 3 विकेट वाले डजंट मैटर ब्रो. इन लोग के पास भी चले जा रहे थे विकेट, उन्हें फिर भी खेल रहा था एग्रेसिव. मार्करम टिकाना, वही तो मार्करम अगर टिका नहीं, उन्हें खेला, शॉट्स मारा शॉट्स, बट अगेन उसका बाय द टाइम ही वाज गेटिंग आउट फिर वही हो गया ना, रन अप बॉल ही हो गया था 87 ऑफ 87. भाई मगर वही है, रन अप बॉल फिर प्रेशर निकाला टेल एंडर से, so the required rate was like 2 runs in over. तो आप वो देखो, the tail enders could have played dot balls because of the Markram. If Markram played like Babar, this game was done. You think the tail enders will chase 30 of 18 on this pitch? There's no way. Because he batted like that, they needed 20 of 50, 20 of 60. रोक के खेल रहे थे उन लोग. वो उसकी innings, Markram की जो innings थी, it was world class innings. That's how you have to play. You have to take risks and you have to चलाओ गेम. भाई आप ठीक है, आप छक्के नहीं मार सकते, कोई बात नहीं, आप सिंगल डबल तो निकाल सकते, डॉट बॉल खेलने की जरूरत नहीं है. अब वही सवाल है ना मुस्तफा, देखो अब इन्हें चले गया, चलो बाबर चलेगा, 50 मान लेके चले गया, उसके बाद नीचे के शादाब और साउथ अच्छा खेले, फिर कोई टिका नहीं उसके बाद. तो प्रॉब्लम वही है ना कि भाई मेन प्लेयर है यार, वो मेन प्लेयर तो है, बट मेरा तो वही कंफ्यूजन है भाई कि नहीं कर रहा कि इतना स्लो अगर खेल रहा है तो उसकी अप्रोच में गलती है, राइट? उसकी अप्रोच में, स्ट्रेटजी में गलती है. ही हैज टू रोटेट द स्ट्राइक. नो प्रॉब्लम, विराट कोहली डजंट हिट सिक्सेस एवरी सिंगल बॉल व्हेन ही कम्स इन, बट यू फाइंड द गैप्स, यू रन, रोटेट, डोंट पुट प्रेशर ऑन द अदर गाय. व्हाट इज हैपनिंग? ही इज ट्राइंग टू होल्ड वन एंड अप एंड एवरीवन एल्स इज गेटिंग प्रेशर. चाचू उसके प्रेशर में आउट हुआ आज, रिजवान उसके प्रेशर में आउट हुआ. यू हैव टू rotate the strike, bro. Like, I'm not like one of those guys who's against Babar Azam. But मैं जो देख रहा हूँ, अगर रिजवान और चाचू और रिजवान का देखो, yes they accelerated and stuff like that, but they had ample amount of time also to build an yes, there was. How many dot balls did they play today? You tell me that first. How many dot balls did Babar play? Babar played a lot of so then of course there's going to be pressure on the other end. हाँ, अदर एंड पे प्रेशर भाई अगर आप सिंगल दोनों तो 15th या 10th ओवर में आ गए ना. देखो आप ही बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका जो सिंगल डबल निकाल रहे थे, वो निकाल सिंगल डबल बोल रहा हूं मैं, सिंगल डबल निकाल, उन्होंने नहीं निकाला था सिंगल डबल. तो ऑल इट वाज अ सिंगल डबल गेम. आई एम नॉट सेइंग ही हैज टू हिट सिक्सेस. अब वही है ना भाई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सिंगल डबल का हिसाब से तो मैं तो आपको वही बोला कि फील्डिंग में फर्क है. अरे यार मगर बैटिंग में भी फर्क है. उन्हें ही इज प्लेइंग लाइक दिस, वेयर इज द सिग्नल, टेक इट आउट. उन लोग के पास भी ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका हैड फील्डर्स एवरीवेयर, देयर वर गैप्स देयर. ही डिड नॉट, ही वाज ब्लॉकिंग, उन्हें डर के खेल रहा था. ही वाज नॉट looking. I'm not, aggression doesn't mean आपको आगे बढ़ के छक्का मारना. You have to find ways to get runs. Markram wasn't hitting every ball for boundary. These guys weren't hitting every ball
ball for boundary. They were rotating the strike, finding the gaps. That's all he had to do. आप पूरे dot ball खेल के आप एक end वो कर लिए, then it puts pressure on the other batter to come and hit. आप वो भी देखो, like you know, I have nothing against Babar Azam. मेरे हिसाब से Babar Azam is a very good batter. Like you know, today I didn't really mind his captaincy. I know people will not agree with me. Usama को लेके आया, Usama wicket आके पूरा game change हो गया. So I'm not like against him, but he has to learn, man, how to rotate the strike. मेरे लिए वही है. और एक और चीज ये है कि भाई जो नवाज और ये बाकी के लोग थे, they should have stick out till the 50th over. वो 50th over तक खेल लेते हैं, 10-20 रन 30 रन और आ जाते हैं आराम से, रन बॉल ले लेते हैं यार आप. लाइक शादाब आउट हो गया, फिर सऊद आउट हो गया, फिर नवाज आउट हो गया, शाहीन आउट हो गया. इन लोगों को आती बैटिंग, ऐसा नहीं कि इन लोगों को बैटिंग नहीं आती. अगर ये 50th ओवर तक टिक जाते, 30, 25, 20 रन भी मार लेते यार, पूरा गेम का कम्प्लेक्शन बदल जाता. बट वो ये है ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे इफ्स बट्स तो हमेशा रहेंगे. बट डीआरएस का जो कॉल था यार, वो डीआरएस का कॉल अगर एम्पायर उंगली उठा लेता, खुजाल में भी उंगली उठा लेता तो हो गया था. मगर उन लोग का वो भी जो था, जो उसामा का विकेट था पहले, बट पंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यानसन का कंट्रीब्यूशन बहुत की था. लाइक आई मीन यस, मार्करम था ये, वो यानसन आके जो 20 मारा 14 बॉल्स में, आके चिक्का मार दिया, ये कर दिया, उसको अंडररेट कर दिया यानसन को. यानसन के 20 रन जो मारा, वो 20 रन चेंज कर दिया एंड 15 जो वाइड गए. आप देखो, मैं भूल जाऊंगा, तुम चेंज बहुत जल्दी कर रहे टॉपिक से. तुम बोले डीआरएस का उन्हें जो ये क्या बोलते हैं, उसामा जो विकेट लिया था वो भी डॉजी था यार. दैट वाजंट आउट. कौन सा एलबीडब्ल्यू? और ये जो था शमसी का प्लम था. एलबीडब्ल्यू में तो मिसिंग आ गया था एक सेकंड को, लेकिन तो उसमें क्या लिखा हुआ था, हॉकाई में मिसिंग, फिर एकदम से आउट हो गया था. वो डॉजी दिखा मेरे को, वो भी. तो आई थिंक इवन आउट हो गया वो. बट ये जो शमसी का था वो तो प्लम था. एम्पायर कॉल नहीं था, क्रैशिंग इनटू लेग, मिडिल एंड लेग था वो. बट चलो, because when we saw the game, soon as it happened with the naked eye, we said out है, right? Like it, and then you saw the एम्पायर आई डोंट नो ना क्या बात कर लेते. No, but मैं बोल रहा हूँ वो दूसरा भी वो नॉट आउट था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो क्या था, मेरे को वो तो आउट नहीं दिखा था. तो अंपायर दैट आई वाज kind of confused with DRS today. I don't think DRS got like. पहले तो एम्पायर कॉल का डिसीजन निकालो. एम्पायर कॉल इतना लग रहा तो आउट दे दो, नहीं लग रहा तो नको आउट दे. लाइक ये बहुत एनोइंग चीज है कि भाई एम्पायर कॉल पर्सनली मेरे को तो समझ में आता नहीं, इरिटेटिंग दिखता. बट एट द एंड ऑफ द डे देखो भाई, साउथ अफ्रीका कैरेक्टर बताए, साउथ अफ्रीका शुड steadfast, जो भी बोला आप, जबरदस्त उनला एंड करे गेम. Marco Jansen and that 15 wides cost Pakistan the game. Pakistan is potentially out of this World Cup. England is out of this World Cup. It's all about right now. If we're looking at it, कल के बाद मालूम हो जाएगा clearer कि Australia, South Africa, New Zealand, India will be most likely a top 4 unless the drama continues in this World Cup, which most probably one-sided दिख रहा अपने को हर चीज अभी तक. But this game changed at least a little bit of mindset. बहुत टाइम के बाद एक अच्छा गेम देखने को मिला. ये अफगानिस्तान पाकिस्तान भी था, but Pakistan and South Africa बहुत सालों तक याद रहेगा कि भाई. But also South Africa today, the number of extras they bowled was ridiculous. No balls. उन्हें शमसी 2-3 डाला. 22. I think उससे पहले भी when Babar came on strike, someone bowled no ball. I forgot who. There was too many extras today. शमसी तो 5 या कुछ कितना. As a spinner, he bowled too many no balls. You can't bowl that many no balls. So South Africa, the discipline, they have to work on that. There is a lot of room to improvement. आज बच गए उन लोग, but too many extras today. I think in the field, the drop catch also Rizwan का, Jansen could have got him out a bit earlier. That partnership could have been broken, but okay, ठीक है. But more the extras, the discipline from South Africa, that's a worrying sign. Also, the death bowling was a bit better today. I would give them that. It was better. They got Pakistan all out. Lekin my issue was with the Bavuma still the weak link for South Africa. As captain, you should step down for the team. I mean, he's captaining very well as well. And again, the changes that they made, Shamsi आ गया. Again, yes, pitch dictated that कि Shamsi खेलना. But yeah, you can't take out the captain. अगर आप देखें, he's the third highest scorer today, right? Yeah. Wait, and he was playing well. A couple of good boundaries. Aiden Markram 91, David Miller 29, and your third highest scorer is Temba Bavuma 28. So I don't think उसको निकाल सकते टीम में से. He's the one who's building this team. He has character. ठीक है. Sometimes he doesn't show form in ICC World Cups, and Reza Hendricks should play. I also agree with you, but this is Temba Bavuma's team. This is very clear that they're backing him. Maybe you will be right, and he gets out for Ducks in the next games and say nikalo usko. Lekin I think this is his World Cup. Like he's backed this team. He's leading the side. He's and today he was batting well. I don't think मेरे को like उतना बुरा नहीं देखा. गलत शॉट खेला उन्हें, लेकिन overall I think. But how many 20 innings will you take from वो तो पाकिस्तान को भी पूछो. इमामुल हक को देखो 20 के आगे जाता ही नहीं उसकी गाड़ी.
एक 70 मारा, वो भी उन्हें बैंगलोर में मारा, But bro, you've taken a lot of ducks from Rohit Sharma. You've taken a lot of ducks from KL Rahul. From Virat Kohli didn't score a century in 3 years. You श्रेयस stuck with अय्यर him. तो अभी भी शॉर्ट बॉल Shreyas करता Iyer did. So there will be players who will ईशान have. किशन. But if you, as a team management, if you believe that this guy is the captain, we're not going to drop him. Then think. If he steps down himself, it's a different thing. Then I don't know. Yeah, he can probably give that excuse that he gave injuries जो थी उसको. Yeah, but उन्हें भाई आज तो but कई को कोई भी नहीं खेलेगा भाई, कई को कोई भी उन्हें कंट्रीब्यूट करा आज. पंटर तुम कैप्टन है, तुम स्टेप डाउन करते, तुम नहीं खेले तो नहीं वैसा. लाइक देखो, अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन की जीरो तो है नहीं. उन्हें 28 मारा आज. एंड चेंजेस इन द फील्ड कर रहा है, कैप्टनसी कर रहा, बहुत बेहतरीन कैप्टनसी कर रहा. आई एम नॉट सेइंग कि एडन मार्करम कांट कैप्टन. आई थिंक एडन मार्करम इज अ वंडरफुल फैंटास्टिक लीडर, बट दिस इज Bavuma's team. I think right now they can keep going with this. They're winning. Why do you want to change a thing? I completely agree. In the future, Risa Hendricks comes in, Bavuma goes out. But this World Cup, I don't think. And Bavuma, bro, recently in bilaterals against England, he was smashing it. It wasn't like he's out of form or anything. आज भी उसके बाउंड्रीज काफी अच्छे थे, टेक्निकल शॉट्स अच्छे हैं. अगेन ही नॉट गॉट वंस सी द नैरेटिव विल चेंज. अगर उन्हें 100 मान लिया कल, एक बात बोल रहा 80 मारे, रिजा hendricks 65 85 जो भी मारा परसों, फिर उन्हें नेक्स्ट मैच में परफॉर्म नहीं करा. ठीक है, बबूमा ठीक हो गया. जब तक यू नो ना स्टेप डाउन भी कर सकता बबूमा, मे बी ही माइट इवन स्टेप डाउन. तो आगे आगे देखना पड़ेगा. हां, they believe him, and I think more than anything they're playing under him as a unit. And you need a captain on the field, of course. You need a one who can control everybody. Maybe Riza Hendricks comes in, Aiden Marker might not be having that level of he does. He's world class. He's world class with the bat, of course. But but like he's the one who's built this team. I think give him the chance, let him play. Of course, you want him to score runs as captain, but he will get them. He's not that far away. I think Bavuma. But आज मेरे को वही शौक लगा कि आई मीन चलो 4 विकेट ले लिया शम्सी, but I think Markram deserved the man of the match. Who? Markram, he deserved the man of the match. शम्सी को दे दिया ना, 4 से 60 रन में 4 विकेट ले लिया. पर मेरे हिसाब से जो इनिंग्स मार्करम अगर नहीं खेलता तो साउथ अफ्रीका का मैच ही नहीं रहता था. बोल सकते हैं, मगर अब शम्सी का पहला भी गेम था. मार्करम तो will keep doing this in his World Cup, which is a world class player. And Shamsi, it was his first game. There's a lot of pressure on him because he does get criticized. PDP जाता है and वो to come and take 4 wickets. 4 wickets, I think he did a fabulous job, and he made sure कि Pakistan were all out. In the end, it was those 30 runs which won them the game, right? Yeah. Which, like, I mean, 20-30 runs that potentially Pakistan could have खाली scored. अगर वो 50 ओवर तक खेले थे, 15 रन भी मार लेते तो बहुत फर्क पड़ा था. So all out कर दिया उन लोगों को. पाकिस्तान अब यहाँ से काम था भाई, घर continue. अभी तो आउट नहीं हुए मैथमेटिक्स भाई. इंग्लैंड है, अभी पाकिस्तान कहाँ जाएंगे? I think they continue. This should give them confidence. It's heartbreak, I understand, but continue playing. They showed that they can compete with this. At least they're competing. Like England are not even competing, right? Yeah. They will. It's going to be very tough to take right now. What should they do? They have to win the remaining games. How do they get the energy? They're a professional team. Babar has to inspire them, and they need to, continue to win. At least to win the next 3 games and give themselves a shout. For the semis. आप सीधा जाके फखर रहमान के कमरे में 2-4 स्प्रेया मारो वॉलिनी की और उसको खिला लो, लाइक पट्टा डाल के खिला लो उसको. आज मैं देख लिया. इट्स नॉट लाइक लोग बोलते हैं कि भाई इनकी बेकार टीम है, ये है वो है. बाबर इज नॉट अ कैप्टन. टुडे आई सॉ दैट दे हैव टैलेंट. दे हैव थोड़ा बहुत था टैलेंट. उनके पास. लाइक शाहीन स्पेल, द वे ही बोल्ड, उन्होंने पूरा गेम पलटा दिया भाई. लाइक आई हैवंट सीन, लाइक इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी सीन अ स्पेल लाइक दैट. 50 अगर उसका डीआरएस का चले आता था हारिस रऊफ का, भाई पलट जाता था पूरा नैरेटिव. आज कैसा आ गया प्रेशर में. एंड रिकॉर्ड वाइज पाकिस्तान ऑलवेज विन दीस काइंड ऑफ मैचेस, लाइक T20 वर्ल्ड कप. कुछ स्टैट है जो मैं क्रिकेट पर पढ़ा था. First time probably in 6 times मैं first time ना फिर हारे. And because 2015 they needed 4 games. They won their and last 4 games. 2019 they won their last 4 games. And then now that's what we were expecting them to continue, but they showed they're an inconsistent team, but they have that ability. It's not like they're कोई है करने पे उठ रहे तो कर दे सकते हैं, वैसा है वो. बट या थोड़े बहुत तो गैप्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं जो 50 ओवर में बैटिंग नहीं करे पहले, एंड देन थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं स्पिनर्स लेट अ लिटिल बिट ऑफ बॉल्स गो फुल, अ लिटिल बिट लाइक हाफ वॉलीज दिए फास्ट बॉल, वो तो होगा ही. बट लाइक आई थिंक थोड़ा बहुत और कंसिस्टेंट डाल सकते थे, वाइड्स अवॉइड कर सकते थे. 271 में आप 15 वाइड घुसा दो, वो एक प्रॉब्लम है. बट जिस तरीके से वसीम जूनियर आज आके थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन दिया पूरों को, आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक. क्रैम्प्स के रखते हुए उन्हें डालते गया. वो एक्टिंग है नहीं हो, वो नहीं मालूम करा भाई, बंदा जबरदस्त डाला. कैचिंग बेटर थी आज, पूरे कैचेस तो भी पकड़े आज. बाबर 2 कैचेस पकड़ा क्रूशियल प्रेशर सिचुएशंस में, तो इट पॉजिटिव देख सकते हैं आप. बट यस, वो अगेन इफ दे फिनिश्ड इट ऑफ, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट नैरेटिव फॉर पाकिस्तान टीम.
But match wise, neutral wise, bhai, the best game right Maharaj now. also batted really well. बहुत जबरदस्त. Punter Singh Shamsi's 4 runs got him the man of the match. That's crucial, man. Those 4 runs that he scored was also very crucial. The fact that he survived. जो भी टिकावा रहा है रो NGD Yeah, like when you're under pressure like that, just to even survive and not get out is a huge thing. And Shine was getting the ball to reverse. It wasn't easy at that time for NGD and these guys. But I think Maharaj was world class today with the bat. जो patience बताया, जो maturity he was very calm today. No issues at all. मैं समझा match खत्म है. I'll be very honest with you. I didn't see South Africa coming back when there's only 2 wickets remaining. But he made sure कि like even though that they slipped, okay, I'm there. I will bat through it all. He left the ball very well. There's a few deliveries he could have easily nicked, but he left the ball pretty well as well. He was calm, composed. Even the winning shot, it was a very safe shot. आगे निकल के नहीं मारा. वो ही shot पे उन्हें अगर आगे निकला तो he was stumped. So I think it was very good batting from Maharaj, and he was very composed, and it showed South Africa still have a bit of fight, after Janssen. So I mean South Africa, they've been really good in this tournament. A lot of learning from South Africa. ऐसा बोले chasing करे. They're also inconsistent team. I think South Africa, Pakistan also, these guys are exciting teams to watch, but they're inconsistent. They will have faults. They will have. And it's good for them. ऐसा learnings मिल जा रहे हैं. But they're very dangerous. आप देखो जो खेल रहे हैं उन लोग, their intent is बिना डरे खेल रहे हैं. out हुए तो out हुए, कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे. आप मार्कम को भी देखो, बॉल 1 से उन्हें जो उठाया थर्ड मैन के ऊपर जो छक्का मारा, the way he was playing the leg side shots, the cover shots, straight down the ground. He was very good today. Quinton de Kock, the way he batted today, I'm forgetting about him. 24 of 14 जो उन्हें मारा, he put pressure on Shaheen Afridi, targeted the best bowler. He's like, I'm going after you. Then again, it was a bad shot the way he got out, but he set the tone for South Africa. That run rate helped them towards the end to win the game. Understanding African middle order is showing how it's done, especially the England people just go, the other expectations है England के players से, definitely England. But England, I'll tell you, Pandra, my opinion is that they're an excellent team. They're a world-class team, but they're playing very bad as a unit. Form-wise, पूरे एक साथ form के बाद nobody is playing properly, and you have to criticize their individual form. But the way they play, the manner with they play, I'm not going to criticize that because they've changed cricket. They've come all the way to here because of that. Template. Rohit Sharma is playing that template. A lot of people are playing that template. So I'm not going to criticize their methods or anything like that. I'm going to criticize just their form. You have to criticize. They're just all out of form. Their short selection has been very poor in this tournament. Their bowling line in length has been very poor in this tournament. Their fielding, they've been very lethargic. Basics. Yeah, like Mark Wood, your premier fast bowler, 150 jo dalta hai, 160. This guy is not bowling properly. So like you have to criticize the individual players. But their template it's good. I have no problem with that. I think they're just going through a rut right now. We've seen other great teams. It's happened to them, and now it's happening with England. So I'm not like of course you have to criticize them, but the way they play or anything, all-rounders जो है आप जो बोल रहे हैं just चल रहे नहीं उन लोग, नहीं तो उन लोग you'll see them they back till 11 England. नहीं वही एक साथ सबका फॉर्म गिर गया and कोई संभालने वाला नहीं है वहाँ पे. Ideally you would look to जॉर्ज बटलर, leadership, inspiration कुछ तो भी दिखना था. And इन IPL में भी खेलते हैं इन लोगों को जरा better wickets का अंदाजा है, but at one point पूरे आके बिखर गए यहाँ पे. वही back to the drawing board, वो basics पे work करना, ये सब इंग्लैंड का. कल के मैच में भाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, how you looking at this? New Zealand is potentially into the semi-finals. Australia win this, cementing their pitch. It is a very good game. Dharamshala, अपन देखे, pitch-wise थोड़े बहुत trickiness है. Outer field is more tricky. So going into this, who you favoring and like कैसा देखने वाले आपने match? Everyone will want New Zealand to win. The teams who have not qualified yet, Afghanistan, England, Pakistan, Sri Lanka, they all want Australia to win. But I think, New Zealand to win, not Australia. But look, New Zealand have coming off a loss against India. It's been a while since they played. 6 दिन हो गया उन लोग को. They've also got a big break. Australia are now on the rise. They're on the thing. Yeah, they beat Netherlands and whatever, but they've won 3 games in a row. They're looking at dangerous. Players form में आ गए वापस. I think Australia will beat the crap out of New Zealand tomorrow. But I hope I'm wrong because I really like this New Zealand team. I think despite Kane Williamson not playing, the way Tom Latham has played, यही है. देखो आप 10 साल से बोले नसीम शाह आप बोल रहे हैं, कोई और बोलता भाई हार्दिक पांड्या. But look at New Zealand, उनका main player नहीं है भाई, और उन लोग they're performing so well in the World Cup. South Africa didn't have Rabani. फर्क वही है ना, इन लोगों के जो भी टीम में प्लेयर आए हैं, they all got opportunity to play throughout there. जो आप पॉइंट निकाले थे. Yeah,
वही है, like, and that's the thing, right? Like, they don't depend on one individual, even if he's the main individual, right? So that's what I like about New Zealand in particular. I like that even South Africa are doing that similar kind of thing कि भाई नहीं है प्लेयर, नहीं है जो दूसरा है उसको लेके आओ, आज करो. आज पाकिस्तान में दिखा वो कि भाई ठीक है, नसीम शाह नहीं है, वसीम जूनियर है हमारे पास, आज दिखा वो. And that's क्योंकि आज what वसीम cricket, जूनियर और दादा भी you can't have punter mentality कि भाई आप खाली रमीज भाई के बिना मैच नहीं जीत सकते. नहीं, आपके पास आशीष भाई है, आपका मुस्तफा है, इस्माइल है, जीत सकते हैं आपके पास कितने लोग भाई, आपको जीतना मैच. एंड ये मैं भी सीखा, मैं भी लाइक पंटर के साथ था कि भाई अगर ये प्लेयर नहीं है आप नहीं जीत सकते. बट what I've learned over the years covering cricket is that you have to have a squad, you have to build a squad, and New Zealand have built a squad. They have they have players like Tom Latham will step up, Will Young will step up, Ravin Rachindra, और वो कहां से आ गया पुट्टा. Chapman, they're producing players, and this is what I like about New Zealand. So I hope that they do play really well tomorrow. And उनका प्राइम बैट्समैन उन्होंने डेवन कॉनवे भी नहीं ले रहा स्टार्ट, उसके बावजूद जीते तो बहुत बड़ी बात है. Like Conway is also not in hitting form, but what I say about Australia, they have a very good record against New Zealand. They normally dominate them. ठीक है, 2015 में they lost, but वो भी close game था. Yes, so I'm thinking Australia will win tomorrow, but I hope it's a cracker of a game. I don't know why सुबह वाला है, शाम का रखना था वो. धर्मशाला में शायद वो रात में फॉग का सीन है शायद, नहीं मैं वो खाली ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं. या तो हम लोग के ड्रोन्स वहां पे फिर रहे तो शायद उससे डिस्ट्रैक्शन हो गया प्लेयरों को. बट ड्रोन से ज्यादा अपन अभी डाले एक धर्मशाला का व्लॉग कल आने वाला है. आप लोग देखो, टीजर हो गया, हम लोग हो गया वहां पे पूरा ग्राउंड, और पूरे कनाडा में बता दो पंटर वहां पे. न्यूजीलैंड है one advantage, they playing at Dharamshala where they played last, so you would know the conditions better. 100% yes, they would know the conditions better. थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता, और हारे वहां पे तो आपको और मालूम कि भाई कौन से एरियाज में डालना, कौन से एरिया में नहीं डालना, क्या गलतियां हुई लास्ट टाइम. एंड अगेन Darryl Mitchell with another 100 probably up his back, but देखना पड़ेगा. Would you have played Rabada over Ngidi today? I don't think so, because the pitch was a little bit on the slow side. So 100% I would play Rabada. You would play Rabada? I think it's a very smart move. पिट सकता था ना. नहीं, Rabada is world class, man. पिटा हुआ है अजू ने. कौन सा पिटा हुआ है bro? He's a world class player. I think it was smart move, but they just like rested him, light low बोल के यहाँ पे संभाल लेंगे हम लोग, फिर वो आएंगे. संभाल तो लिया. भाई उसका स्पेल नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. हाँ, जबरदस्त स्पेल था. नहीं ये टाइम वर्ल्ड कप में तो अच्छा चल रहा. पिच रिपोर्ट सुदीप दादा राइट, या पिच रिपोर्ट बोलो धर्मशाला का या न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स एंड बांग्लादेश का भी मैच है, वो कहाँ है दादा? मेरे को नहीं मालूम. दादा धर्मशाला तो आप देख लिए न्यूजीलैंड इंडिया का, उसमें क्या बताना आपको पिच के बारे में? मेरे को नहीं मालूम. लाइक ईडन गार्डन्स के पिच के बारे में भी क्या मार सकते हैं वहां पे? फ्लैट विकेट होगा, फ्लैट विकेट होगा. बांग्लादेश नेदरलैंड्स का तो मैच there is grass initially, like I've seen in Eden Gardens and IPL and stuff like that, but it's the first game of the tournament over there, so it should be a flat wicket. It's a smallish ground as well, smallish dimensions, not ground is huge, but smallish dimensions. देखना पड़ेगा भाई, कल पिच रिपोर्ट में देख के आपको बताता हूं. मेरे को नहीं मालूम. लखनऊ का भी पिच तो टर्न होने वाला है, मेरे को ऐसा दिख रहा है शायद इंडिया माइट गो 3 spinners, वो मेरे हिसाब से वो तो व्हाट वी हैव सीन राइट नाउ. कोलकाता वाज नेदरलैंड्स, या बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड ईडन गार्डन्स में. एंड दूसरा मैच है धर्मशाला में. स्पिनिंग ट्रैक इन लखनऊ बोल रहे हैं, स्पिनिंग ट्रैक इन ईडन गार्डन्स बोल रहे हैं. लखनऊ में तो जो ट्रेडिशनली देखे अपन, इट इज अ स्पिनिनिंग ट्रैक, स्लोअर विकेट है, रन मिलना मुश्किल है वहां पे. लखनऊ सुपर जायंट्स के होम है, तो वो याद है कि भाई हां रविचंद्रन अश्विन खेल सकते हैं. हार्दिक पांड्या का कोई अपडेट नहीं है अभी. लास्ट ये था कि भाई थर्सडे को ही विल बी अगेन चेक्ड आउट, उनको मेडिकल और बीसीसीआई की मेडिकल टीम असेस करेंगे, बट अभी तक उनका रिटर्न डेट नहीं मालूम. डजंट लुक गुड, क्योंकि एसीएल का टेयर अगर आपको एंकल में है तो काफी टाइम लगता है उसको हील होने में, एंड भागने में फिर आपको कितने की रेंज ऑफ मोशन, कितने की चिल्ला आते. बट वील कम टू नो दैट प्रॉब्ली ओवर दिस वीकेंड. टिल नाउ अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है. विल आल्सो बी ऐसे क्या बोलते रहा पंटर उधर. नहीं, मैं बोल रहा प्लेयर्स को कैच नहीं छोड़ना चाहिए. कामरान अकमल, बैट्समैन को सेंसिबल होकर खेलना चाहिए. शाहिद अफरीदी, स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए बैट्समैन को. मोहम्मद हफीज, खुद के साथ और मुल्क के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा प्लेयर को. क्या बड़े डायलॉग. डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा. मुझे लग प्लेयर शुड अटैक फास्ट बॉलर. शोएब मलिक, इंग्लिश शुड लर्न बाबर आजम सो ही कैन टॉक इन कॉन्फिडेंस विद कॉन्फिडेंस. उमर अकमल, तो आई थिंक स्कैम है. मोइन खान, आजम खान फर्दर फिटनेस ही नहीं है, प्लेयर्स को तो फील्डिंग कैसा करेगी. ये तो है भाई, काफी वैलिड पॉइंट्स है इसमें. With regards to fitness, with regards to just the aggressive temperament, at least in the power play and before like in the middle overs also, आप खुद slow हो गए, आप pressure build हो जा रहा है आप पे. At least one should take the front, जो थोड़ा बहुत दिख रहा था बाबर रिजवान की पार्टनरशिप. बट शादाब एंड साउथ शकील की पार्टनरशिप में आप देखो, शादाब वेंट आउट ऑफ हिज वे, काफी अच्छे छक्के मारे उन्होंने. 2-3 तो बेहतरीन 2 या 3 छक्के मारे उन्होंने. अच्छा लग रहा था शादाब की बैटिंग. बट देन you go ahead and throw your wickets.
50 ओवर्स आप क्रॉस नहीं करे, दैट वाज द वर्ल्ड वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड. अगर 50 ओवर्स खेल जाते, आप 15-18 रन भी मार लेते यार, वो 6-8 ओवर में जो भी बाकी थे, बहुत फर्क पड़ जाता था Gautam आपको. Gambhir has said, I feel records and rankings are overrated. Babar hasn't played an impactful knock in World Cup 2023 so far. The guy who wins matches for his team is the real number one. That's also, and today also Gautam Gambhir said one more thing about captains not winning the matches. कुछ ये बोल रहे थे, पर या कल ये आज बोले या थोड़े दिन पहले बोले हिंदी कमेंट्री में कि भाई कप्तान खाली आपको मैच नहीं जिताता. आई थिंक दैट वाज अ स्टैब एट MS धोनी एंड दैट 91 and 97 कंट्रोवर्सी अबाउट 2011 का. तो काफी लोग उस पे भी उछल कूद रहे थे कि भाई आज कैप्टन when you match it, the whole squad wins you matches. What he said priorly भी उन्होंने वही बोले थे कि भाई आपको खाली एक इनिंग्स याद आ रही है, बट बाकी में युवराज सिंह भी थे, उन्हों भी थे. तो गौतम गंभीर तो ऑलवेज इज कंट्रोवर्शियल फिगर, लेकिन मजा आता है, ऐसे अच्छा करते हैं गेम को. पाकिस्तान अगेन आज मजा आया, काफी हद तक बहुत मजा आया. मुसाब भाई एंड वी वर आल्सो एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ दिस गेम. बहुत टाइम के बाद वर्ल्ड कप का माहौल लगा मुसाब भाई आफ्टर दिस मैच. Yeah, it was a proper game, man. World Cup का मतलब this is why we love cricket. When the momentum, because 50 overs is about 50 overs beauty है, इतने ओवर आप हम लोग देखते इतना मैचेस देख रहे 3 हफ्ते से, आज एंजॉय कर रहे कि भाई because we don't know what's happening. अरे damn, ये हो गया, वो हो गया. We were glued to the TV today. When of course you enjoy batting, like Maxwell's batting, you enjoy Rohit Sharma's batting, Klasen's batting, you enjoy bowling from Bumrah, you enjoy bowling from Shaheen, everything. But when it's by wicket 6, 4, boundary, single, double, who's going to win? 1 wicket left, then that's when you enjoy the game. वो कॉन्टेस्ट बन गया था कि वो दोनों वर लुकिंग साउथ अफ्रीका अपने आप को टेबल पे टॉप करने के लिए लड़ रही थी, पाकिस्तान अपने के लिए जिंदगी बचाने के लिए खेल रही थी. तो वो इंटेंट, वो एटीट्यूड दोनों टीम्स में दिखा के देयर वाज अ फाइट, देयर वाज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन दीस टू. तो वो बहुत जबरदस्त दिखना. अफगानिस्तान एंड अफ्रीका बीटिंग पाकिस्तान आफ्टर डेकेड, इंडिया बीटिंग न्यूजीलैंड आफ्टर डेकेड, लंका बीटिंग आफ्टर द रिजल्ट्स आर चेंजिंग. अफ्रीका, हां, what about South Africa? दक्षिण अफ्रीका. So yeah, I mean, काफी records today. इसमें आज I think first time South Africa chased down Pakistan. That was also one record that was broken in this match. और highest chase by Pakistan against Pakistan for South Africa successful वाली ये record भी टूट गई. And yeah, I mean एक और record टूट गई कि पाकिस्तान का जो वो 4 run streak रहता, first time I think they've not been able to do it. And yeah, now they'll probably have to try and win the remaining three games जो बाकी है. हार्दिक पांड्या का तो अभी कुछ नहीं है अपडेट. वही है कि भाई they will let us know in due time about the injury and the return date of हार्दिक पांड्या. अगर उन्हें आ गया तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैंप में. Hardik Pandya will resume his training this weekend from Khel. Now the BCCI had an option to play Hardik with injections, but decided to let him heal naturally. Yeah, that's what it is from Hardik Pandya. So resume training is a good sign, but again we don't know कि भाई वो heal कितना टाइम लगेगा. अगर उन्हें आया तो ideally I think उसको direct semi-final, अगर इंग्लैंड से जीते तो शायद direct semi-final entry मिलेंगे उसको. Yeah, because India win, they qualified, right? If they beat England. Yeah. 100%. Yeah, table top हो जाएंगे फिर. Yeah, India I think will qualify. Then it will be seeing 1, 2, 3, 4 क्या रहता. That will be very interesting to see. Tomorrow you said England, New Zealand, Australia versus and then Netherlands, Bangladesh in the night. Netherlands, Bangladesh, that's a good game too. That's a good game to, but not for Netherlands it's a good New experience. Yeah, Australia, New Zealand level नहीं है, but like it's a good game. If like you enjoy Netherlands playing World Cup में डोप टेस्ट होता क्या? लॉल करके देखो, पूछेंगे फिर. अच्छा सवाल है वो. होता शायद मेरे हिसाब से. I guess, yeah. Because I remember कोई 2007 वर्ल्ड कप में किसी के साथ हुआ था या फेल करे या उससे पहले. I think ये टेस्ट तो होते रहते हैं I think. But bro, it's very important, interesting thing. आज तो स्टार स्पोर्ट्स भी दिखा दिया वो क्लिप वसीम अकरम का. Apparently इन लोग पाकिस्तान 2 साल से फिटनेस टेस्ट ही नहीं करा यो वाला. Yeah, so yo-yo test is basically like a bleep test, right? So basically आपको क्या, basically आप भागते रहते हैं, वो you have to cover the distance in a certain amount of time, and then you increase the distance. So can you explain like have you done it before? I've done it once. I've done a bleep test. I haven't done a yo-yo. So yo-yo and bleep is similar only. क्या होता है basically आप आप running, you have to just make sure distance आप cover करते जा रहे हैं. Then you have to वो उनके प्रोफेशनल लेवल पे तो I don't know, हम लोग तो ऐसे ही कर रहे थे. No, like for me when I did the bleep test, that time miles and time. Yeah, there's a certain time and then it beeps, right? So you have to beat that time. That is the same thing. Yes, yo-yo and beep will almost the same thing. But yes, अगर नहीं करे तो भाई that raises a lot of question about fitness, and they don't look fit, man. But मैं क्या बोलूँ मालूम, like जो भी आप criticize करते ये वो. But is that a board call or is that the ICC's call? Like I don't know, but yeah, you should have fitness test because look again,
like even if Pakistan reached the semi-finals, if they won this game and they went and qualified, they still, every time yay problem hota, they start badly and then they start blaming fitness, this and that. So I think if you just cover those areas and you improve your fitness, you improve your fielding, then you don't have to always have these problems. But what they've shown today is that they have talent. They have Talent is there, talent, they but yeah, can they need fight, to they can just compete. nurture their fitness as well. And you should not worried about Naseem. He's not there. He's not there. You can't do anything about One it. bowler does not change the That's a dimension of the problem game. of your planning, right? That is not his fault. That is not the captain's fault. Actually, it is the captain leadership. You can say planning, right? Planning का issue है. It's not Naseem Shah's fault. He's not there. If he's not there, it's okay. आप कितने बार उसका नाम पकड़ेंगे? अगर उन्हें था तो ये वो. God knows if he was there, maybe we don't know what would happen. और भी बढ़ सकता था. हाँ बिल्कुल. Because the margin for error in India, बहुत है yeah, margin for in India, the margin for error is very भाई less. आप इंग्लैंड को ही देख लो. No one thought England would perform like this. So anything can happen in a World Cup, but fitness is something that they are lacking. आप देख लो क्रैम्प्स होते जा रहे प्लेयर्स को, काफी वर्कड अप दिख रहे हैं. शाहीन की भी बीच में तबीयत हो गई थी, हारिस की भी तबीयत खराब हुई थी, बाबर की भी तबीयत खराब हो गई थी. देयर लॉट ऑफ थिंग्स देयर. और आप देख लो ये उम्र में विराट कोहली भी यो-यो टेस्ट कर रहे हैं. He's topping the yo-yo test, so it's a very big thing and an important aspect fitness of this game. टैलेंट है, नो डाउट. अगर टैलेंट नहीं होता तो भाई कब का ही रूल आउट. इंटरनेशनल गेम में सर्वाइवल आप कुछ भी कर लो, अगर टैलेंट नहीं है आपके पास आप नहीं सर्वाइव कर सकते. एंड वो दिख के आ जाता आके अलानिया ये बंदा इसके लिए नहीं बना हुआ ये टेम्पलेट के लिए. सो फॉर दैट एस्पेक्ट तो भाई दे लुक एज अ गुड टीम. इट्स जस्ट दैट आज तो भाई बहुत मजा आया देखने में, बट दे कांट क्रॉस द लाइन. अगर हारिस का डीआरएस होता, नैरेटिव चेंज होता था, लोग ये सवाल उठाते भी नहीं थे. नहीं मगर वही उठाना चाहिए. वही तो बोल रहा हूँ. आप जब लाइक नहीं उठाते, राइट, अगर जीत गए ये वो सेमीफाइनल पहुंच गए, then you cover the cracks. So you have to look at these specific things. Of course when you lose you're going to criticize. When India loses, रोहित शर्मा को निकालो, इसको निकालो, उसको निकालो, ये तो होने वाला है. हाँ, अपने we have a lot of emotion, sentiment, especially the DC community. They get very upset when they lose or get extremely excited when they win. But there are certain things, even if you win, like South Africa won today, they have to improve on their discipline with the ball. They cannot bowl so many extras. They have to improve their batting while chasing, and then their bowling as well, like during the death overs and everything, that to be much better. I think that's where South Africa will improve. Pakistan, where they have to improve, you already mentioned it, that's not a problem. They have to just look at the positives and then move on. I don't think there's no point now. You've lost the game, it's on to the next one. You have to leave it to fate and keep continue to win. Whatever is left off, आप उसको अच्छा करके निकाल के खत्म करो. बोलते ना लास्ट का जो एंड का जो भी बचा हुआ है 3 गेम, वो 3-3 अगर आप जीत के एटलीस्ट यू आर गोइंग टू गो बैक विद समथिंग रादर देन नथिंग. एंड अगर आपकी किस्मत पड़ी, ऑस्ट्रेलिया हारी बैक टू बैक, और इंग्लैंड कुछ जज्बा कर दी, अफगानिस्तान कुछ वहां से फेल कर दी, देन यू माइट कम बैक. Afghanistan have a chance now too, right? Because Pakistan, yeah, and Australia has to lose. अगर ऑस्ट्रेलिया पूरे जीत गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा बाकियों के लिए. श्रीलंका भी विंग्स में है. श्रीलंका भी they have to play Bangladesh, they have to play someone else, and then they play India. Sri-Lanka have to play Bangladesh maybe. Yeah, Bangladesh and India, so they also have a good chance. But again, वही है कि भाई Pakistan, whatever is left off, they have to do their best. For India, we're going to wait for Lucknow. वहाँ पे तो like I think India have a very good chance because of the quality of spinners that we have. And against an England team right now that looks worked up and not in the best of form. But England के पास कुछ lose करने नहीं है. That's always a threat as well. तो कल England will play spoil for a lot of teams, yeah. जो है, like, which could help Pakistan. But they're playing Pakistan too, I think. New Zealand can be eliminated if they lose to Australia tomorrow and they lose to South back to Africa back. and Pakistan. Yeah, 100%. ये नहीं मालूम था मेरे को. काफी अभी कॉमन है. अभी देखो भाई वही है ना, 4% जो इंग्लैंड को चांस दे रहे हैं, पाकिस्तान को चांस दे रहे हैं. यही है कि भाई न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, if they start tumbling a bit on the top, then it get, and but Australia is the main thing for these ones. But अगर ऊपर के भी थोड़े बहुत शेक हो गए, then interesting हो सकता है. But wait, but a punter, like if New Zealand lose, still they'll be open because they can also get out. वैसा भी हो सकता है. हो सकता. But the teams who are losing need to start winning. Like we thought that today for Pakistan it's a must win. We thought yesterday for England it was a must win. But उन लोग हारे फिर भी थोड़ा सा chance है. But they have to win. If they're going to continue to lose, there's going to be zero chance at all. And they'll have to improve on that. And like I said, oh nice, yeah. I think that's what it is. And also now the teams are getting used to the conditions. You can tell it's not like 400 every game now. They slowly, especially when you're playing on the same pitches, same grounds. थोड़ा सा competitive. 270 is a competitive score. Match winning हो सकता था आज, and you're going to see that as the tournament progresses. Kolkata might be a different thing right now because it's a fresh pitch, but as the tournament progresses, we saw in Bangalore yesterday, like England got out for 150. So the bowlers are coming into the tournament. It's not just going to be batting and 500 ऐसा नहीं रहेगा. बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा. Discipline is a lot going to play a very big part, especially with the fast bowler. Line and length थोड़ा भी आप दे दिए तो फोड़ दे रहे आपको.
एंड फील्डिंग अगेन, आप फील्डिंग तो लाइट ही नहीं ले सकते ये टूर्नामेंट में. एंड या आई मीन वही है मतलब भाई, आज तो भाई काफी एंटरटेन हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, लाइक अ लॉट ऑफ इमोशंस ड्रामा. दो हम लोग को कुछ करना नहीं था, बट इट्स जस्ट लाइक द एक्साइटमेंट ऑफ क्रिकेट, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो देखने को मिला आज. Pakistan and England face each other last, so that could be a virtual knockout match. It could be, but it depends on Australia to do, New Zealand to do. Or it could be a knockout game, or it could be a game for wooden spoon. It could be anything. Depends on the other something, results. yeah, But T20 final I think it's events. made it interesting for the Utahs because all the teams are still in the game. Yeah. But if you're like a fan of a particular team, you wouldn't take this loss. You would think you're out. That's what it looks like. 100%. But mathematically, all the teams are still in. Anything can What happen. we saw in the T20 World Cup is Pakistan came out of nowhere, so that could happen for some of the team, like maybe Sri Lanka, maybe Afghanistan. Abhi bhi hai in the mix of things, but it's also dependent on the top 3 right now and Australia. डेड रबर गेम, हाँ हो सकता है वो डेड रबर हो सकता है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का. व्हाट इज दैट? Durex. Huh? Dead rubber. This is game over. Game over. Yeah. Punter क्या लिख दे रहा है? Game over. Yeah, I think that pretty much wraps it up. We'll go watch some football now. It's Change of game. time for the FPL. We have a channel also called Chasing Green Arrows, तो आप लोग वो भी देखते जाइए. And कल मिलेंगे, कल 2 मैचेस है वो डिस्कस कर लेंगे, प्रीव्यू, रिव्यू, मिड इनिंग्स, and फिर संडे इंडिया का मैच है तो we'll get you the latest on the press conference, everything tomorrow also. Yes sir, and yes की like, subscribe, share. धर्मशाला का टीजर डाले, कल तक आ जाएगा. टीजर डाल दिया हम लोग. टीजर डाल दिए हम लोग. आप देखो, पंटर देख के पूरे कनाडा में सबको, पूरा कनाडा में भाई मुफ्ती लाइव बोल रहे. तुम बहुत लोगों को जानते हैं वहां पे, पूरे YouTube हर चीज वो लिंक हर उम्दा के टीवी में इसके पार्टी बसेस रहते, तुम्हारे हजार लोगों के साथ चिल करते. आज फ्राइडे नाइट है, सबको वो दिखाओ. मेरे तुम्हारे से मेरे को 1000 व्यूज तुम्हारे लोगों से होना है. पंटर्स बॉयज एंड गर्ल्स बोल के 1000 पंटर के पंटर. He knows a lot of people. He's a very sociable guy, very likable guy. He knows a lot of people. He can promote us. But I hope, but I'm telling you, you will like it. That's why I made the confidence about it. If it's something that you wouldn't like, I wouldn't tell you to watch it. I would say see the teaser है, लेकिन vlog कर लेंगे तो vlog teaser देखो. नहीं, teaser भी मेरे को होना views 1000, vlog के मेरे को 10,000. तो भाई के आपके तरफ से होना, बस आपके तरफ से मतलब आप सबको दिखा दो. वहां पे जो नहीं दिखता क्रिकेट उनको भी दिखाओ, जो जिसको धर्मशाला का डी नहीं मालूम उसको भी दिखाओ. सबको दिखाओ. तो मैं जितना भी प्रमोट कर सकते आप प्रमोट करो वो. एंड व्लॉग्स बहुत जबरदस्त. फैज भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. ही इज गोइंग टू सिटी covering games, and hopefully he will cover more of the games. We have a few weeks left now of the World Cup, so make sure you hit the like button, subscribe button. I am signing out. My thank you so much.